Happy Janmashtami to all of you. The festival of Krishna Janmashtami is celebrated to mark the birth of Krishna, the eighth avatar of Vishnu. Hindus celebrate the festival by fasting, singing, and praying together and visiting Krishna and Vishnu temples. Dahi Handi is celebrated the day after Krishna Janmashtami in Maharashtra and other western states in India. The story behind the birth of Krishna is an interesting one. So let's watch what happened. A long time ago in Mathura, there was a king named Kans who was infamous for his greed and unfair rule. After the marriage of his sister Devki to Vasudev, a prophetic voice from above announced, Kans, your tyranny is going to come to an end. कंस तुम्हारे अत्याचार का अंत होने वाला है. The eighth son born to Devki and Vasudev will kill you. This enraged Kans and he imprisoned the newlyweds. आकाशवाणी के बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया. Now Kans went on to kill 7 of Devki's children. दुष्ट कंस ने एक एक करके सभी को मारा. There was no one to stop the cruel and greedy Kans. पर बच्चों, हमें ये मालूम होना चाहिए, pride and greed, अहंकार और बुराई को कौन मार सकता है? Only love. Now the eighth child of Devki took birth. Prophetic voice returned and said, take the child across the river Yamuna to Gokul and exchange him with your friends Nand and Yashoda's newly born daughter. फिर एक आकाशवाणी होती है और उसमें बोला जाता है, इस बच्चे को यमुना पार गोकुल में अपने मित्र नंद और यशोदा की न्यूली बॉर्न डॉटर उनकी बेटी से बदल ले आओ. वासुदेव देखते हैं गेट अपने आप खुल रहे हैं, गार्ड्स भी सो रहे हैं. Across the stormy river, the basket upon his head, the water never rose above his shoulders. When he struggled, a 10-headed snake appeared to protect the child from the pouring rain. 10 सर वाला सांप उस बच्चे का रक्षा कवच बनकर आ जाता है. Vasudev by now had realized that his child was a divine being. Gokul पहुँचते ही वासुदेव switched the children and returned to the prison. वासुदेव अपना बच्चा बदल लेते हैं. When Kans arrived and tried to harm the child, it took the form of goddess Durga. देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हो चुका है. कंस, अब वो तुम्हारा और तुम्हारे पापों का अंत करेगा. और कृष्ण जी को यशोदा मैया ने बहुत लाड और प्यार से पाला. और कृष्ण जी के बड़े होने के बाद उन्होंने कंस का वध किया. सो दिस सिंबलाइजेस द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. बुराई पे अच्छाई की जीत हुई. एंड सो एवरी ईयर वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ कृष्ण, ऑल्सो नोन एज जन्माष्टमी. And students, do you know there are 108 names of Lord Krishna? So let's remember some of his names through this song. हे मुरली
श्रीधर हे दामोदर, कृष्ण मुरारी हे नटनागर, भूल गए क्या विनती सुनकर, हे गोपाला हे गोपाला। Happy Janmashtami. Thank you.